Today we will discuss Elected to God. elected to God is one of the most important topic of our class 10. In this book. Elected to God is written by J.F. J.F. Fernandez. Who is J.F. Fernandez? J.F. Fernandez is an Marxian novelist, a poet and a journalist. Sergio Lafayette Fernandez is called J.F. Fernandez. He was born in 1895 and died 1966. He is one of the Mexican revangelists also. He has written many books in civil conscience and civil issues are there. His stories are exciting and humorous also. Many of his works is concerned with the oppression of Americans. He was awarded a National Prize of Art and Science in 1935. Then, the author J.F. Fernandez has awarded National Prize of Arts and Science in 1935. Before you go to the subject, we will discuss the crest, the new words. The crest means top or the highest part of a hill. Dotted means carted area, overhang area. Predict means foretell or future. Draft means cover. Lotus an ancient woods fly with big groups and rest of the clouds. Solitary, large, lonely or single, upset, distribute. The conscience and inner sense of the right and wrong, peso, currency of several Latin American countries. Now we go to the subject. The house, only one of the entire valley. The house, one of the entire valley. Set on the crest of a lohi. ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଯେ letter to God is written by J.F. Fernandez is one of the most important topic. You may see one more questions in our class 10 high school certificate examination 2025. We will get the question from both short type, the multiple choice questions and long times also. The whole letter to God has been divided into two parts. If you get long questions, it has been divided into two parts. One part is from the first to destroy of his crops, or field, corn field. This is the first question. Second question, what has you? Now, the फसल नष्ट होला परे से चिठी लेके गॉड को क्षतिपूरण पाई लास्ट पर्सन पोस्ट मास्टर तक पैसा पठेबा पर्यंत एटा दुईटा पार्ट के क्वेश्चन आबो लेंचो इज वन ऑफ द मोस्ट फेथफुल पर्सन गोटे विश्वासी लोक ही हैज ए फेथ ऑन गॉड आल्सो ताले से कोट रखथिला द हाउस ओनली वन ऑफ द एंटायर हिल लेंचो the घर कोठिला ना one of the entire valley is set on the crest of a low hill. Crest of the low hill top बुझुछि तेनो लेंचो घर सेई valley रो एकमात्र घर थिला only one in the entire valley से उपत्यका एकमात्र घर थिला जहा घर होछि का घर लेंचो रो घर सेता फैमिली सहित सेठी रहथिला. Set what is about the set of the crest of a low the crest of the low hela छोटो पहाड़ रो सभा ऊपर थिला जोठ को देखिले ता तळकू हला तार धान फसल एते मक्का फसल बा कॉर्नफील्ड देखा जाऊ थिला बा ता घर पाखरे रहिले लेंचो घर पाखरे छिडा हेले सब खेत बाड़ी नद नदी हला पहाड़ ठिकाना देखा जाए तार अर्थ से उच्चा जगह से रही कि ता मक्का फसल को लक्ष्य करि पारु थाय. The house, the only one of the entire valley, set on the crest of a low hill,
from this height ତା ସେ ଘର ପାଖରୁ ବା ସେ ଉଚ୍ଚା low hill ର ପାଖରୁ would see the river field right conducted with flowers that was promised a good harvest से घर पाखे रही हैला ता घर की उच्चा थिला पहाड़ लो पहाड़ छोटो पहाड़ हवा ऊपर थिला तेणु ही would see से जगह था कि से कोन करथला ना see the river नदी को देखि पारथला and also field of ripe corn से जो पाचला मका फसल करथिला पाची आसुथिला अमल हवा ऊपर थिला ताको मध्य देखि पारु थिला corn dotted with flowers dotted हेतिला कोन ना परिपूर्ण हेतिला भरी जायतिला कोठी ना फ्लावर्स रे फूल रे मक्का फसल फूल फुटिथिला बा अमल हवा पाय दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट तो लेंचर मक्का फसल को देखिले लागुथिला जे निश्चित भाबरे भलो अमल एथरा हबो काहेकि ना मक्का फसलटी पाचिबा को जाउथिला फूल रे भरी जाई थिला dotted with the only thing that art needed was a downpour or at least a sword ताले लेंचर मका फील्ड फूल रे भरी जाइथिला आ जना पड़ुथिला निश्चित भाव रे एथरा भलो फसल अमल हबो किंतु हला फसल हबा पई असराय वर्षा दरकार थिला ए डाउनपोर रे स्वल्प वर्षा बा असराय वर्षा दरकार थिला असराय वर्षा हेले हेला फसल तार पाग पाई जीवो बा भलो अमल हबो आ पानी दरकार हबो नाही एटलीस्ट ए डाउनपोर और ए support or at least a swirl downpour or at least a swirl throughout the morning जेहेतु तार फसल भल हेतिला और पानी दरकार चारिआडे पानी मिलु नथिला तेणु से चाहुथिला आकाश को थ्रोआउट द मॉर्निंग सकाळ सारा बा दिन सारा कोन लेंचो हु knew his field intimately लेंचो जे कि मका चाष करथला बा मका चासी थिला से सकाळ सारा आकाश को चाहुथिला जे केतबळे वर्षा असले हबो काहेकि से जानिथिला जे ता फसल को ता मका फील्ड को असले वर्षा निहाती दरकार फिर जे कि निज चाष सहित निज मका फसल सहित जड़ित थिला तेणु इंटिमेटली माने जड़ित थिला चाष रे कोन से फसल चाहछि कोन पोक लागिला कि पानी दरकार बुझुछि तो तेणु अवस्था मका जेहेतु से जने चासी ता फील्ड को से भलकी जानिथिला कोन आवश्यक होछि had done nothing else आ किछि दरकार नथिला केवल असले वर्षा दरकार थिला but see the sky towards the northeast but किंतु see the sky towards the northeast उत्तर पूर्व दिग को हैला से बार चाहुथिला towards the northeast काले वर्षा हबो की काले वर्षा आसीबो की तार फर्स्ट पारा कोन हैला the house is only one of the entire valley का घर लेंचर का घर कोठी अछि ना सेट इन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल क्रिस्ट मींस ऑफ छुटिया पहाड़ रो लो हिल रो हला सबा ऊपरे का घर अछि फ्रॉम दैट हाइट मान से जो घर उठी अछि बा सेही जगह रु फ्रॉम दैट हाइट वुड सी द रिवर्स एंड द field of ripe corn dotted with flowers that always promise a good harvest. What promised a good harvest? The corn field, but the corn. What can see from the house of the lencho? Lencho's house कौन देखियो थिला? The rivers and the cornfields. What was the lencho's house? The Indori Valley. The crest of the Indori. Where was his house? The Indori Valley. No, his house was So it's a creation of in a valley. In the valley. अब crest of the low hill लिखी भी चलो किसी असुविधा नहीं. अच्छा, what did his concrete wants? His concrete want a downpour or at least a swirl. At
at least a sword. What was dotted with flowers? The cornfield was dotted with flower. What was promised to good harvest? The corn was promised to Good good harvest. harvest. Then the house is only in the valley, set on the east of the low hill. From that height, one can see the river and the field, the cornfield dotted with the flowers, and promised to a good harvest. Lencho was intimately concerned, intimately know his field, and he knew that his field by his cloth was needed a downpour or at least a so. So he was looking the sky from the morning light for the source or at least the downpour. Nothing else but sea. किंतु से देखिला कोड देखला नॉर्थ ईस्ट स्काई रे हला सकाळ सकाळ अपेक्षा करथिला वर्षा असले बंद की हला सेते बळे से देखिला कोन ना टुवर्ड्स द स्काई द नॉर्थ ईस्ट पूर्व उत्तर पूर्व आकाश रे असलाय वर्षा बादल देखिला सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट तो से बार-बार चाहथिला से कोपटो नॉर्थ ईस्ट. Now, Vartaman, we are going to get some water. The woman was preparing supper, replied, yes, God willing. So now, we really going to some water. ए समय जेतल भाबुथिला चिंता करथला बार-बार तुबो उत्तर पूर्व आकाश को चाहुथिला से समय से कहला हला नाउ रियली प्रकृତରେ ଆମେ ଅସଳେ ବର୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଇଂ ସମ୍ ୱାଟର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହବ କେଉଁ କାହାକୁ କହିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ଦି ଓମେନ୍ ହେଲା ହୁ ୱାଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସପର ଯେ କି କ'ଣ କରୁଥିଲା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ସପର ତିଆରି କରୁଥିଲା ସପର ମିନ୍ସ ସକାଳେ ଯୋଉଟା ଖାଆନ୍ତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବେଳା ଯୋଉଟା ଖାଆନ୍ତି ଦିପହର ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଲଞ୍ଚ ଚାରିଟା ବେଳେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସପର କହନ୍ତି ରାତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟା ଖାଇବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡିନର बुझेला ताले वी आर गोइंग टू सम वाटर का कहला लेंचो ता मिसेस को कहला बा ता स्त्री को कहला जे कि रोषे करो थिला बा सपा प्रस्तुत करो थिला से कोन कहले ता स्त्री कोन कहले यस गॉड विल नो यदि भगवान चाहिए भगवान को इच्छा हो ताले असले वर्षा हो ए समय द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड ए जो कथा होतिले तो हम कि ता स्त्री से लेंचो कहला हला से समय द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड बड़ बड़ पिला माने कोन करथिले फील्ड रे काम करो थिले व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस एता बडे छोटो पिला के कोन करथिला घर पाखरे खेलुथिला के बडले करथिला अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल माडा के से जिबे तो माडा के पर्यंत से खेलुथिले तेनु बड़ पिला माने कोन करथिले फील्ड कौन फील्ड दी फील्ड एंड छोट पिला माने घर पाखरे खेलुथिले अंटिल दैट मदर कॉल देम कम फॉर डिनर खाइबा पर रात भोजन पाई आ खाइबा पाई डाकिबा पर्यंत पिला माने खेलुथिले इट वाज ड्यूरिंग द मील तापरे खाइबा समय हे गला हैला जस्ट लेंचो हैड प्रेडिकेटेड तेणु लेंचो खाई बसिबा समय रे बा खाइबा टाइम होबा समय रे बा खाइबा को जाउथबा समय रे जस्ट लेंचो हैड प्रेडिकेटेड लेंचो अनुमान कला ए प्रेडिकेट मीन फोरटेल आगामी कोन हो भविष्य में कोन हो भाबिबा जेतु वर्षा आकाश रे बादल देखा लानी खरा कोन गला खरा सूर्य को गोडे लेनी कि कला मेघ तेणु आरोहण बेलेनी पाको चेंज हेलानी तेणु निश्चित भाव रे प्रेडिकेट कला अनुमान कला कोन निश्चित भाव रे वर्षा बोले तो प्रेडिकेट दैट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल
हैला ए समय कोन हैला ना जे बड़ बड़ टोपा वर्षा मन पड़िला in the northeast huge mountains of clouds could see and approaching हैला northeast huge mountains तो उत्तर पूर्व आकाश रे हैला जो कला मेघ थिला ब्लैक बोर्ड कथा क्लाउड कथा कहै सी अप्रोचिंग हैला the air was sweet and तेणु से अनुमान कदा फोर्टी कला जे बिग रन ड्रॉप्स बिकन टू फॉल निश्चित भाव से हला अनुमान करछि फोरटेल करछि प्रेडिक्ट करछि हला प्रेडिक्ट मींस फोरटेल अनुमान करछि निश्चित भावे बड़ वर्षा हबो बा बहुत वर्षा हबो एई समय रे कोन हला ना पूर्व आकाश दक्षिण उत्तर पूर्व आकाश रे कोन है ना माउंटेन पाखरे बड़ बड़ बादल मानो देखिबा को मिला आ कोन दे आर वाज फ्रेश एंड स्वीट वर्षा पूर्व शीतल पवन आसे पवन होय ए समय पवन होगा को लागला दे आर वाज फ्रेश एंड स्वीट एटा जम्बुवार पडिबो उल्टे मोटे लिखि दिबो तुम सजाई के लिखिबो दी एयर वाज Fresh and sweet. the air was fresh and sweet तेणु शीत वर्षा आसवा पूर्व है कौन फ्रेश पवन पूरा भल लागू मीठा मीठा पवन जाको आमे कहती है ठंडा पवन बहवा को लगला the men went out no longer reason the men went out no other reason then to have pleasure and feeling the rain drop in his body लोक माने कौन करती मेन went out घर बाहरी आसिले कौन पाई टू प्लेजर मजा नबा फीलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप रेन अंदर वर्षा रे भिजिबा वर्षा बेगरे पडले कल ठंड लागि बसे भाई बाहर को and when he returned to exclaiming these aren't raindrops from the sky जेतेबेले लेंचो बाहर को आसिला हला actually these aren't raindrops falling from the sky so अनुमान कला ताको लागिला कोन really these are not raindrops वर्षा पड़िबा को लागिलानी लेंचो बहुत बाहर आसिले वर्षा भी तार बॉडी पड़लानी से कहूची हला actually really एटा वर्षा न रेनड्रॉप जो टुपा टुपा की वर्षा पडुची वर्षा बुंदा पडुची बा पानी पडुची एक्चुअली फ्रॉम द स्काई आकाशरु एटा एक्चुअली रेनड्रॉप नहे एटा कोन दे आर न्यू कॉर्न्स कोना बसना पैसा हां ये जो वर्षा टुपा टुपा पडुची से बडा प्रकृति कोन वर्षा न रेनड्रॉप ना न्यू कॉर्न हला न्यू कॉर्न मुद्रा टंका कोन the big drops are pens and pieces and the little are 5 ones बड़ा बड़ा वर्षा बुंदा को 10 टंकिया हैला कोइन दुटा and छोटे छोटे वर्षा को 5 टंका 5 टंकिया काहे से कहूछ बस्ता खुशी सुना because he was wanted for his field once day done for other at least this work otherwise if it will done when the field will not get water there is no possible chances of harvesting तेनु जदि वर्षा न होई फसल हबनी ता मका फसल मरि जिवो तने वर्षा हेले फसल भल हबो आ असले वर्षा हेले फसल पार पाइ जिवो तेनु से जो कोला एटा वर्षा ना एटा वर्षा न जे वर्षा बुंदा पडुनी बडा बडा वर्षा बुंदा कोन 10 टंकिया आउ छोटे छोटे का 5 टंकिया कहिना ता मका फसल को पानी दुगा दरकार थिला तेनु से कहथला एटा वर्षा होनी था हां कोयल पुछि बुझुछि लता फसलटा मरि जिवो तेनु कोन हला सेकंड पर रे हला तेनु नाउ रियली वी आर गोइंग when he get some water Lencho tell to his wife when his wife was preparing supper and his wife answered you what if the god it is the god's will if God works it is the God willing यदि भगवान चाहे ताले वर्षा असरे हबो निश्चित वर्षा हबो लेंचो जतबे ता स्त्री को पचाला जे निश्चित वर्षा हबा को जाउची ता स्त्री उत्तर देला जतेबेले कि the older boys were working the fields and the smaller ones were playing near the house until their mother telling for them dinner at that time
At that time, the northeast sky become mountain, become covered with the clouds, Clouds. and also They promising to be rain. At that time, the sweet and cool Press. and sweet would start. But air was Sweet and sweet press. and fresh. The people Went went for a week. went out of the house for feeling the rain drops in his body. When he examined, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା କାପରେ ଲେଞ୍ଚ ଉପରେ, he feel that, he told that really it is not the rain from the sky, it is the new occurrence. 5 big drops of rain are 5-10 rupees, but 10 pieces 10 cent percent, and the smalls are high. With a satisfied expression, he regarded the field like corn with his flowers. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flower. With a satisfied expression, with a मन खुशी रे संतोषजनक भावरे से धरला जे निश्चित भावरे हला राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स हला ड्रेप इन कंटेन ऑफ द रेन वर्षा पड़े फसल निश्चित भाव में भल हम कि भैया लेंस बा ये वर्षाटा ता फसल को भल काम देव बा फसलटा भल हम. He regarded the field of ripe corn with its flowers, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall. Then Lencho bhavithila, he regarded that, he expressed that, he became satisfied that the rain will be very useful for this corn field. But suddenly a strong wind began to blow. A strong wind began to blow. कहला हठात वर्षा होथला से वर्षा कहला ना बढ़िबा को लागिला. स्ट्रांग विंड ब्लो इति जोर पवन हैला. बुझछि तो पवन बेग बढ़ी गला. स्ट्रांग विंड प्रबल जोर पवन हैला. विथ केवल पवन हैला नी एलोंग विथ ता सहित कोन ना ए rain very large hailstone began to fall. वर्षा जो होथला से भाविथला निश्चित भाव ता फसल पाई भल काम रे आसीबो, किंतु हठात कोनला जोरे पवन बहिबा को लागिला एवं से वर्षा पवन सहित कोन हैला ना पवन सहित वर्षा जोर हेबा को लागिला एवं लार्ज hailstone began to fall. कुआ पत्थर पड़िबा को लागिला. ताहले strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall. केवल वर्षा हला नहीं, केवल जो वर्षा होथला से वर्षा कोन हला ना कुआ पत्थर परिणत ही गला. जोरे पवन बहिला बड़ बड़ टपा कुआ पत्थर पड़िबा को लागिला. began to fall. This truly did resembles a new silver coins. ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସିଲଭର କଏନ୍ ଭଳିଆ ପଥର କୁଆ ପଥର ଏତେଟୁ କୁଆ ପଥର ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା. ବୁଝୁଛି ତ ହେଲା. ତେଣୁ ପଥର ବର୍ଷାରେ କୁଆ ପଥରରେ ସେ ପୁରା ଭ୍ୟାଲିଟା ପୁରା କ'ଣ ହେଲା ଫୁଲ ହେଇଗଲା. This truly did resembles new silver coins. The boys exposing themselves in the rain out and collect the fortune prisons. ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ସିଲଭର କଏନ୍ ଭଳି ଦେଖାଗଲା. ବଏଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଦେମସେଲ୍ସ, ପିଲାମାନେ ସେଠି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ. and rain out collect the fortune results. ସେଇ ଯେତେବେଳେ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଯାଏ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଚକ୍ ଚକ୍ ଛାଡ଼େ, ଗ୍ଲେଜିଂ କରେ, ହୀରା ଭଳି ଦେଖା
जाए सेम कथा कहछि द वर्जिन प्रियस इट्स माने हीरा बुझिछ तो तेनु जेते चकचक देखा जाउची पिला माने जे तो खेलवा को लागिले पकड़ा पकड़ी नहीं दिबे को पथन को बुझिछ तो हला आ चकचक लागुवा हीरा बोले देखा तो दिन से माने से मजा कले they now collect the fortune and jewels ताले कोन हला Lenzo was very satisfied that this rain will be very useful for his country. But suddenly the strong wind began, rain with large hailstorm fell, and the truly did resembles the new silver coins. The boys expressing themselves then and out of the collecting the fortune tell us. It is really getting bad now. It is really getting bad now. এটা আমাদের জন্য part. It's really getting bad now. वर्तमान जो आशा करिथिला कि जेंचो ता पूरा विपरीत होला से जेंति भाबिथिला सेंति हला नाही इट इज वेरी bad बहुत मंद होला बहुत खराब हला कोन ना एग्जामिनिंग देम examine the main I hope it pass quickly जेतले वर्षा बढ़िबा को लागला आपत तो पढिबा को लागिला लेंसो भाबले एटा खूब शीघ्र छाडी जीवो पास करी जीवो पळै जीवो हला बट इट डिड नॉट पास क्विकली किंतु ए वर्षा को आपत शीघ्र छाडीला नाही हमके असले वर्षा कम वर्षा हो हला जो को आपत पडला नहीं पवन जल्दी बोइला सेटा शीघ्र छाडी जीवो त फसल बंची जीवो किंतु बट इट बिकम very bad बहुत अवस्था खराब हला जो वर्षा भाबुथिला शीघ्र छाडी जो सेटा छाडीला नाही did not pass quickly for an hour the hell rain in the house घंटा धरी for an hour हला then hell वापस वर्षा को लागिला on the house हला जेतले वर्षा सहित को वापस जो दे वर्षिला on the house the garden the hillside, the country, and the whole valley, the field was white, so it covered with salt. कौन है ना वर्षा जब तेहला को पत्थर भरला कौन है ना ता घर भी कौन वर्षा रे ना को पत्थर रे भरी गला आउ कौन है ना गार्डन भी भरी गला the hillside पहाड़ पाखा भी भरी गला आउ कौन ना country मका फसल मध्य भरी गला पूरा उपत्यकाटा कोन गला फील्ड वाज वाइट जुआरे चाहिए चारिआडे धवला देखा गला आज कवर विथ सॉल्ट एक्चुअली कुआपथ पानिटा कोन लुणिया जोटे की फसल पई कोन खराब ता छडा कुआपथ खसी की बड़ बड़ टोपा बना पत्थर खसी ता फसल को नष्ट करी ताले व्हाट हैपेंड वर्षा अवस्था के वर्षा कथा वर्णना करा जायछि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ examine the main I hope it passes quickly but it did not pass quickly for an hour the hell rained the hell rained on the house the garden the hillside the cornfield and the whole valley the field was white as if covered with the salt. Not a leaf remain on the trees. Eta thai porthila. Not a leaf remain on the tree, on the trees. Not a leaf remain on the trees. गछरे पत्तटी मध्ये रहिला नाही वर्षारे कुआ पत्थर माटरे सबला झडी गला the corn was totally destroyed ता मका फसल totally destroyed the corn was totally destroyed संपूर्ण भाव रे ध्वंस पाई गला फसल खराब होई गला फसल नष्ट होई गला the flowers were gone from the plants तो डायलॉग अछि the flowers were gone from the plants सब फूल झड़ी गला बुझिस कर मका फूल सब झड़ी गला the lenso's soul was filled with the sadness एबते पडला lenso's soul was filled with sadness lenso द हृदय दुख रे भरि गला lenso द हृदय दुख रे भरि गला not a leaf remain on the trees
ଗଛରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବି ରହିଲା ନାହିଁ। Corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. The lencho's soul was filled with sadness. Why lencho's soul filled with sadness? Because the cornfield was destroyed. The flowers were gone from the plants. When the storm had passed, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଝଡ଼ କମିଗଲା ହେଲା, he stopped. He stood. ଲେଞ୍ଚ ଗଲା, stood ବସିଲା, put in the middle of his field. ସେଇ ତା ଧାନ କ୍ଷେତରେ, ତା କଣ କ୍ଷେତରେ, ମକା କ୍ଷେତରେ ମଝିରେ ବସିଲା, and said to his sons. ଏବଂ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କିଏ କହିଲା? ଲେଞ୍ଚ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଲେଞ୍ଚ କଣ କଲା? ଲେଞ୍ଚ went to his cornfield and set the middle of his field and said to his sons. ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କଣ କହିଲା ନା, a plug of lotus would have left more than this. ହେଲା, a plug of lotus would have left more than this. से कहला जे ए प्लग ମାନେ ଦଳ, लोटस माने सवाख्या गोटे पोक अछि, से फसल को खाइ जाती, बुझिछि, धान गछर से पूरा सबज पत्र सब सफा कर देबे, खाइ देबे, तेनु सेमान को कोन सवाख्या सब खाइ जाती, सेमान थरे आसिला माने आउ रहिबो नै, दळ दळ हेकि आसंती उडी उडी, सेमान भी किछ किछ छाडी जाती, लेंच कहउछि, किंतु ए निया लगा हेलस्टोन कुआ पथर हला, से सवाख्या ठुमी गोळे गला, सवाख्या पोकठु भी गोळे गला, सवाख्या खाइते से किछि हेइ थांता, किछि रहि थांता, बोते सेमान किछि छाडी जाई थांते, जोटा कि आमे अमल करी थांते, किंतु ये जो कुआ पथर संपूर्ण फसल को नष्ट करी देला. A plug of lotus would have left more than this. The hell has left nothing. The hell has left nothing. ये जो कुआ पत्थर हैला किसी रखी नहीं, left nothing. This year will have no corn. This year we will have no corn. ये वर्ष हमको खाइबा को मिलबो नहीं, हमको पकड़े कोन कोन नहीं, मका नहीं, मका तक मुख्य फसल हम दिन धान कोटी गम सेबला से फील्ड दे, से वैली दे सबटो बड़ फसल, प्रधान फसल थिला मका. So से कहउछि this year we will have no corn, हम खाइबा को पाइबा नहीं, बा अर्थ हमका मका मिलबो नहीं. The night was sorrowful one. बढ़िया लेखा अछि. The night was a sorrowful one. से दिन राति सारा लेंच भाबिबा को लागला, sorrowful ता मन दुख होई गला, पूरा राति सारा रातिटा भाबी लागला, राति सारा ता मन दुख दे भरी गला, रातिटा पूरा दुख दे पाइला हला. The night was a sorrowful one. All our work was nothing. All our work से को जते हमें काम सब करिथिलु, जते फसल को पई परिश्रम करथु, nothing तक कि मूल्य ही रहला नहीं. There is no one who can help us. There is no one who can help us. एठी केही नाहंती हला जे हमको सहाय्य करिवे. We shall go hungry for this year. हमको ए वर्ष सारा कोन ए वर्ष भोकला देबको पड़िबो. We shall go hungry this year. हमें उपास रे रहिबो. But in the heart all who are lived these solitary houses of the middle in the valley, there was a single hope from God. Help from God. But in the heart of all who live that solitary, ये एकाकी जगह रे, निछाटिया जगह रे, जो कोठी लोक नाहंती, solitary भलिया हला, से जगह रे केही भी नाहंती. इन द मिडिल ऑफ द वैली, ए वैली रा मध्य भाग रे केही सहाय्य करबा को लेंच पाखरे नाहंती, बा लेंच को सहाय्य केही करिवे नहीं, बा ए पाखरे केही भी नाहंती एंटायर वैली रे. सो ओनली वो एकमात्र बाट अछि, बा जने केवल सहाय्य करी बोली तार विश्वास आसिला के ना, सिंगल वो एकमात्र आशा के हेल्प फ्रॉम गॉड.
यदि भगवान साहाय्य करेंगे ताले आमे बंचीबू आमे खाइबा को पाइबू अदरवाइज हला वी विल बी हंग्री दिस ईयर तेणु आमे कोन करिबो खाइबा को पाइबो नहीं डोंट बी अपसेट even though he schemes like the total loss remember no one dies in hunger हला डोंट बी अपसेट से डिस्ट्रेस होतला से निज निज भितरे कोन कोठला किछि द्वंद्व पड़ी जाउतला अपसेट हे जाउतला ट्रबल्स हे जाउतला कोन करिवो नाही डोंट बी अपसेट किंतु से अपसेट भितरु निज कोन कला शांतन हला निज भितरे साहस आनिला हला एनाफ टू सेव स्विम्स लाइफ टू टोटल लॉस जेते क्षति हेले मध्य फसल नष्ट हो जाइथिले मध्य जेते हैरान हेथिले मध्य जेते दुख कष्ट पाइथिले मध्य हला से निज को अपसेट कला नाही रिमेंबर हला एवं ता मन को आसिला हना नो वन डाइज इन हंगर केही भोकरे मरि जाई नाही से निज भितरे साहस बांधिला डोंट बी अपसेट केबे भी ट्रबल हेला नाही निज को अपसेट मन कला नाही से निज भितरे साहस बांधिला जदि वो तार फसल टोटल नष्ट होई थिला हला ता मन को आसिला जे नो वन डाइज ऑफ हंगर केही भोकरे मरि जाई नाही दैट व्हाई ही से नो वन डाइज इन हंगर से कोई वक्त लगेला बाता मन साहस बांधिला जे भोकरे केही मरि जाई नाही ताले दिस इज वन हाफ वे लेटर टू गॉड रा अधा हला दुटा एट तो जो दुटा लंग क्वेश्चन आस भाई पारे गुटेला व्हाट द हेलस्टोन डू विथ द कॉन्फ्लिक्ट बा व्हाई द व्हाई द लेंचो बा व्हाई लेंचो became troubled how his conflict become destroyed जहाँ भी को दीपक तीन प्रकार में ही पहले उठे क्वेश्चन हला how did Lencho's conflict destroyed बुझेला what did the Lencho's conflict wants कौन चाहते ला और what was the impression of Lencho towards the rain वर्षा प्रति लेंचो का मनोभाव कौन थिला बा लेंचो काहे की उत्तर पूर्व आकाश को चाहुथिला पर लेंचो का फसल किंपरि नष्ट थिला हाउ लेंचो फील डिस्ट्रैक्ट व्हाट इज द इंप्रेशन ऑफ व्हाट लेंचो टोल्ड अबाउट द रेन जहां भी को इटा अपन को उठे क्वेश्चन आरंभ हदु फसल नष्ट होबा पर्यंत तापरे जेतोले से भगवान को ऊपर एक नो वन दाइज इन हंगर को पुणी पैसा मांगो लास्ट पर्यंत जे पोस्टमैन पैसा पठेबा पर्यंत से आउट क्वेश्चन तेनु इटा हला दुटा पेपर तुम काली पढिबा सेटा ताले एक रिवाइज करो रिकैप कर लेसन को कोन ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जेल फाउंडर्स one of the Mexican writer, a novelist also. In this subject, J. Founders has been described how Lencho became very handmade, become lust-headed, be described about them. The letter to God is written by J. Founders is one of the most Mexican novelists. In this subject, the letter to God, Lencho is the main character. By the Lencho, J. Founders has been described the feelings of a person. Here, if we go to the subject, Lencho's house was only one house in entire valley. It was
set in the crest of low hill. From that hill one can see the river and the cornfield dotted with flowers and promising for Good harvest. good harvest. Good harvest. So, but Lencho's this cornfield was wanting but needed a downpour or at least a soil. So Lencho was looking towards the northeast sky from the morning because he is intimately connected, very intimate with his cornfield. That his cornfield wants water, some water. So he was thinking about the there. After some time, he told his wife that really we are going to get some water. Really we are going to some water. But his wife answered, if God wants, or if the God will be blessed, we will get some water. Sure. At that time, the younger boys were working in the field. The small girls was playing nearby house until his mother was calling for dinner. At that time, the woman was preparing the supper. After some time, Lencho predicted that really we are going to get some water. And some time after, he saw that the mountains of the northeast sky was covered with the clouds, and it became going to rain. The air was fresh and sweet. The people come out from the house for filling of the raindrops in the body. In their body. So it is become very pleasure. It is become very pleasure. So nature became also come out from the house, and when the raindrops touch his body, she became very happy and told, really these are not rain from the sky. These are new rains. The big drops are 10% and the smaller 5. In this way, Renzo became very satisfied, became very happy that his cornfield gets some water, and it will be good harvest. And she think that it will be very useful for his cornfield. But his thinking became changed. Suddenly, the strong wind started to blow with heavy rain, and large hailstone began to fall. When the large stone began to fall, the whole valley covered with the silver coins. But at that time, Lenzo think that this will be passed in some times, but it did not cross in quickly. It became covered with the whole cover continued for 1 hour, and the hailstone covered with the total valley, the house, the valleys, the hillsides, the cornfields, entire valley, and it was like to become very unhappy towards the Lenzo's field. So he became very unhappy and felt that it is going to be very bad now, and he became think that his cornfield become destroyed. The flowers were gone from the plants. The Lenzo's head, Lenzo's soul become, Lenzo's heart become very unhappy. The Lenzo's soul was filled with sadness because his cornfield was totally gone. When the storm had passed, Lenzo went to the field and stood on the middle of the field and told to his sons
to the sons. A plague of lords, a plague of rulers would have left more than this. But this hell has left nothing. We were going, we have not gone in this year. In that night, Lencho became very sorrowful. The night was very sorrowful one for the Lencho because the Hearthstone has totally destroyed his country. There is no one helping. All his work become gone. All his work become gone. There is no value of his work. Lencho is a man of works. Lencho is a man of works. He has hard labor. He is a hard labor, but all the labor has gone due to Halstar. So he became very unhappy, and there was no one help to him. He think that the God will help him because there is no one in this valley, and he became very unset, but he did not very upset, and became heartily to himself, and told that he remembered that no one has died hungry, so he became pasty also. In this way, the writer Adil Pandus has been described Lencho's ideas and the about his conflict and the Lencho's idea towards the conflict, and also became very sorrowful things towards the